Hello everyone. So as we all know that only very few days are left for upcoming NEET PG exam. So today we'll discuss the tips and tricks that you should be following in these few days to accelerate your preparation and to boost up your rank. Because आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि people who were scoring very good in initial GTs or mid GTs didn't get the very good rank that they really deserve. So ये जो लास्ट का पीरियड होता है ना ये कंक्लूड करने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है एंड इसी पीरियड में यू हैव टू कंसोलिडेट व्हाट यू हैव स्टडीड यू हैव टू कंक्लूड द थिंग्स अप एंड यू हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दीज डेज सो दैट आपको वोलेटाइल चीज़ें बिल्कुल एग्जाम में याद रहें जो कंसेप्ट आपने बिल्ड किया दैट स्टेज विद यू फॉर लॉन्ग बट वोलेटाइल चीज़ें आप लास्ट स्टेज में रिवाइज नहीं करते तो they just vanishes और आपको एग्जाम में कुछ याद नहीं आता. So the concluding part is really important and it's an art to conclude well. So now we'll discuss what things you should be doing. The first and most important thing is revision. As we all know that revision is the key. It's the thing that we know from day one. So revise तो आप सब लोग कर रहे हो. So just keep on revising the notes that you have prepared and try to revise them fast. अभी ऐसे slow revision का time तो है नहीं, so you should be revising like 3-4 subjects per day. So in that way you will be able to revise all the 19 subjects in these remaining days. Also another thing is कि हम बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि 19 सब्जेक्ट्स इन लास्ट 10 डेज में करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क तो इट्स ओके मैक्सिमम जितने सब्जेक्ट्स आप कर पाओ स्पेशली द वंस जिनमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो यू शुड रिवाइज दो सब्जेक्ट्स फर्स्ट ऑल्सो कीप द 20th कॉपी विद यू क्योंकि अगर आप 19 के 19 सब्जेक्ट रिवाइज नहीं भी कर पा रहे हो स्टिल इफ यू हैव रिवाइज द 20th कॉपी लाइक 2-3 टाइम्स इन दीज 10-12 days so you can definitely be more confident. Other than that, you have to practice at least 50 to 60 MCQs per day in these last few days. And you should be making the custom modules and practice the question bank in the sets of 50 because abhi exam mein kya hoga ki you will be getting 4 sections of 50 questions each. Other than that, you should be practicing PYQs once in these few days, the remaining days. बिकॉज अभी पी वाई क्यूज हमने पहले किए हैं वी ऑल नो बट लास्ट फ्यू डेज में एक बार पी वाई क्यूज को करना है चाहे आप एक्सप्लेनेशन मत पढ़ो जस्ट डू द पी वाई क्यू एंड वन ऑफ द ways in which you can do the PYQs fastly is you can try this reflex app in which it's a PYQ only app and you can practice PYQs very fastly in that app. Also the explanation given there is very concise and clear so you can try that. Other than that you can just stay positive in these few days feel FOMO because सबको ऐसा फील होता है ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डेज कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं बट एट द एंड जो लास्ट तक पढ़ता है ईच वन ऑफ देम गेट सिलेक्टेड ऑल द बेस्ट